Good morning, friends. Important video on GST chargeability on pre-packaged and label commodities effective from 18 July 2022. As we know in the background, there was specific exemption from GST on unbranded or branded where right has been forgone. Now this concept is being done away with. Now the provision saying exemption will be available only when it is other than pre-packaged and labeled. So pre-packaged and labeled commodities, goods, food items, lot of food items, cereals, etc. So what they are saying, henceforth from 18 July 2022 GST applicable when it is pre-packaged and labeled goods. So concept of branded where right has been forgone or unbranded is being done away with. Simple concept from 18 July 2022. आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब ये प्री पैकेज एंड लेबल्ड ना हो. अगर ये प्री पैकेज एंड लेबल्ड है तो जीएसटी लगेगा. अब इनने कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस किए. क्या चेंजेस किए? द इंपॉर्टेंट चेंजेस. They have substituted clause Roman 2 in explanation of goods exemption notification 2/2017 duly amended by notification number 7/2022 central taxes rate notification. They have given the definition of what is the meaning of pre-packaged commodities. Pre-packaged commodity means which is defined under section 2 subsection L of Legal Metrology Act 2009, whereby a package in which commodities are pre-packed or a label safely secured thereto and which requires declaration under Legal Metrology Act and rules made thereunder. So important is, what is pre-packaged commodities? First, as defined under section 2 subsection L of Legal Metrology Act. And such package contains the commodity pre-packed or a label safely secured thereto and which requires declaration under Legal Metrology Act and rules made thereunder. So what is the definition under section 2 subsection L of Legal Metrology Act? Pre-packaged commodity means commodity which without presence of purchaser, it's packed in a container, whatever nature, and then they are saying whether sealed or not, so as to determine the product packed in a container is a predetermined quantity, and that is the definition provided under section 2 subsection L of Legal Metrology Act for pre-packaged commodity. So simple meaning हम सबके लिए अब क्या हुई? अब जीएसटी लगेगा अगर ये प्री पैकेज एंड लेबल्ड goods or commodities, and lot of changes they have made in the exemption notification, goods exemption notification 2/2017 read with GST rate notification 1/2017, and 1/2017 ko they have amended by notification number 6/2022
Central Taxes Rate Notification effective from 18 July 2022. यानी अगर ये प्री पैकेज एंड लेबल्ड कमोडिटीज हैं तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगा एज पर द जीएसटी रेट नोटिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको समझना है और एक एक करके समझना है जिससे क्लैरिटी इमर्ज हो। प्री पैकेज कमोडिटीज का मतलब यह हो गया ए पैकेज wherein commodity is pre-packed or labeled safely thereto and which requires declaration under Legal Metrology Act। अब हम डिक्लेरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 of Legal Metrology Act talks about declaration, read with Rule 3 and Rule 6 of Legal Metrology Package Commodity Rules 2011 for retail pack. So what are the declaration required for the retail pack which is meant to be sold from retail shop to individual or group of individuals? What are the declaration required? Name and address of the manufacturer, name of commodity, quantity of that particular commodity, month and year of manufacture, and the sale price, retail sale price for retail sale. These declaration required on such retail pack. There are two exceptions provided, दो exception जिसको आप कह सकते हैं exclusion. When package is more than 25 kg और 25 लीटर, यानी कोई भी पैकेज जो 25 kg या 25 लीटर से ज़्यादा है उसके लिए ये डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। जब डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड। और सच पैकेज मीन्ड फॉर सेल टू इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। अब ये इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर क्या हुए? लाइक व्हेन दे आर परचेजिंग इन ए लॉट, लाइक रेलवे, डिफेंस, होटल, ये सारे लॉट बाइंग करते हैं। When they are purchasing in lot, they are being termed as industrial or institutional buyer. In that case, this declaration is not required. So, जब हम industrial institutional की बात करते हैं, that package may be less than 25 kg also, or more than 25 kg also, GST exempted. यानी अब हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि अगर रिटेल पैक है तो डिक्लेरेशन मुझे क्या क्या डालनी है under section 18 read with rule 3 and rule 6 of Legal Metrology Package Commodity Rules 2011 एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको डिक्लेरेशन डालनी है तो आपके ऊपर रिटेल पैक के ऊपर जीएसटी की चार्जेबिलिटी होगी एंड दैट इज व्हाट कॉल प्री पैकेज कमोडिटीज। अब होलसेल पैकेज के लिए हम डिस्कस करते हैं, क्या होलसेल पैकेज के लिए डिक्लेरेशन की जरूरत है? Rule 24 of Package Commodity Rules 2011 under Legal Metrology requires declaration even for the wholesale package. It is not for sale in a retail market, but it is being sent to the intermediary, sell, delivery or distribution to intermediary, which either comprises of, so some package which is containing specified number of retail pack, so that specified number is 10 or more. So यानी एक पैकेट हमने बनाया और उसमें 10 और 10 से ज़्यादा रिटेल पैक डाल दीजिए जो हमने होलसेलर को बेचे। So declaration for wholesale. Or second, when it is packed in a bulk but meant for smaller quantity to be sold under retail. So दो चीजें इन्हें डिक्लेरेशन फॉर होलसेल पैकेज के लिए भी डाल दी।
अब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्टेन एक्सेप्शन एंड सर्टेन एक्सक्लूजन. फर्स्ट, when such package is up to 10 gram or 10 milliliter. Certain food items, when packed by restaurant and hotel etc., specified drug formulation, and last agriculture produce which is being packed for a quantity more than 50 kg, 50. These are 4 exclusion for declaration in wholesale package. Let me now summarize. GST कब लगेगा और कब नहीं लगेगा. ये कब नहीं लगेगा? If it is other than pre-packaged and labeled. Other than pre-packaged and labeled. This is the concept now applicable from 18 July 2022. कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप किसी रिटेल शॉप पे गए और आपने रिटेल शॉप पे यू आर परचेजिंग सर्टेन फूड आइटम्स और वो आपके सामने ही पैक करता है, आपके सामने विद इन योर प्रेजेंस, परचेजर इज प्रेजेंट देयर, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा. यू नीड टू कीप इन माइंड दैट definition as given under section 2 subsection L of legal metrology act is commodity which is packed without presence of purchaser. जब purchaser presence है तब GST नहीं लगेगा. यानी जो भी खुदरा माल आप बाजार से खरीदते हैं वो आपके सामने ही पैक करके देता है, उस पर लेबल्ड है, उसका नाम है, उसने अपनी शॉप का नाम डाला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो परचेजर के सामने उसे पैक कर रहा है. राइट? इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन कमोडिटी इज पैक्ड विदाउट प्रेजेंस ऑफ परचेजर, whether or not sealed, and that is determining predetermined quantity. Please bear in your mind. And what are the declaration required in terms of section 18 read with rule 3 and rule 6 of legal metrology package commodity rules 2011. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस, नेम ऑफ कमोडिटीज, क्वांटिटी, month and year of manufacture and retail sale price for retail pack जो प्री पैक कंडीशंस में है. दूसरी बात मैं आपके सामने रखूं, होलसेल पैकेज की जब मैंने बात की तो होलसेल पैकेज के लिए मैंने बताया डिक्लेरेशन जरूरत है, रूल 24. एंड होलसेल पैकेज में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई पैकेट जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा रिटेल पैक रखे हुए हैं तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. एंड वट एवर इट इज कमिंग आउट GST लीविएबल. कब नहीं लगेगा, मैंने एक्सक्लूजन भी आपके साथ डिस्कस किए, और एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन जहां पे डिक्लेरेशन फॉर रिटेल पैक की जरूरत नहीं है, जो 2 ब्रॉड पैरामीटर हैं कि कोई पैकेज मेजरिंग मोर देन 25 kg और 25 लीटर, उसको हम रिटेल पैक नहीं मानेंगे और डिक्लेरेशन की उस पर कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हम इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को बेच रहे हैं, चाहे वो मोर देन 25 kg हो या लेस देन 25 kg हो, तब भी GST, क्योंकि GST की वो डिक्लेरेशन रिटेल पैक की जरूरत नहीं है, तो GST exempted. So this is what in brief which is coming out. Important changes is being made in GST rate notification 1/2017, duly amended by notification number 6/2022, central taxes rate notification, and goods exemption notification 2/2017 and amended by 7/2022, central taxes rate notification, effective from 18 July 2022.
a big transformation. I have tried my best to explain when GST leviable and when GST going to be exempted. For item-wise rate notification, you can go back to GST goods rate notification and check it out. Thanks for watching. Stay tuned for lot many changes which is being announced and effective from 18 July 2022. Thanks for watching. Thank you very much.